Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here some different formula which are important in the organic chemistry. It is called as the how to drawing the molecule in the 3D dimension. अगर किसी भी molecule का आपको 3 dimension structure निकालना तो कैसा निकालेंगे आप? So question is that how to drawing the molecule in the 3 dimension. यानी कहने का मतलब 3D के अंदर 3D is called as 3 means इस 3D इंडिकेट डायमेंशन. 3 डायमेंशन में वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला कैसे रहेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? ड्राइंग द मॉलिक्यूल इन द 3 डायमेंशन. 3D क्लियर. सो 3D मीन्स व्हाट हियर? 3D कॉल्ड वन टाइप्स ऑफ व्हाट हियर? द स्ट्रक्चर. इट मे बी डायगोनल, टेट्रागोनल, पेंटागोनल, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम which is directly attached to the central carbon. Okay, so how to ड्राइंग द मॉलिक्यूल इन द 3 डायमेंशन. देखा 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला कैसा रहेगा उसे बोलेंगे क्या बेटा हम लोग? ड्राइंग द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन, शॉर्ट फॉर्म में 3D. फर्स्ट, व्हाट इज द वेज फार्मूला? डी इज द साइलेंट हियर. सो व्हाट वी टेल इज व्हाट हियर? वेज फार्मूला. व्हाट इज द वेज फार्मूला? सो दिस फार्मूला इज डिफाइंड एज व्हाट? दस it have the 4 bond. The formula which have the 4 bond, 2 bond is in the plane of the paper and 1 is the bond going to the below the paper and third bond projecting above the paper called as the wedge formula. Clear beta? What is the wedge formula? It is defined as those formula which contain a 4 bond, 2 bond are bond in the plane of paper, 2 bond in the plane of paper and third bond going to the below the paper and fourth bond projecting above the paper called as a wedge formula. क्लियर है बेटा? इन सिंपल में ये जो बिटवीन में एक जो मिडल में एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल CH4, how many carbon? 1 carbon and 4 hydrogen. CH4, you know CH4 is the member of alkane, name called as the CH4 methane. So how to write the what here or how to convert the structural formula of a methane into wedge formula? So it is a wedge formula. Actually what is the formula of what is the molecular formula of methane? CH4. What here? CH4. And what is structural formula of methane? So carbon attached to hydrogen, 4 hydrogen. It is called as what here? It is called MF. MF called as the molecular formula of methane. Where it is called SF. SF called as what is structural formula of methane. Now this structural formula how to convert into the wedge formula like that of this. क्लियर है बेटा? ये जो है मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है, उसको चेंज कहाँ में किया? स्ट्रक्चर फार्मूला में, और स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज कहाँ में करेंगे हम लोग? वेज फार्मूला में. ठीक है. सो व्हाट इज वेज फार्मूला? द फार्मूला इज डिफाइंड एज द फार्मूला विच कंटेन अ 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड आर in the plane of paper and third bond going to the below the paper and fourth bond projecting above the paper called as a wedge formula of methane. For example methane is a wedge formula. ऐसा लिखते हैं बेटा आप, है ना? ठीक है. यानी जो दो बॉन्ड जो रहेगी वो प्लेन पेपर, एक पेपर लेना है आपको, 2 जो बॉन्ड है आपको प्लेन यानी पेपर की प्लेन में रखना है और थर्ड बॉन्ड जो है तो पेपर के पीछे रखना है गोइंग टू द प्लेन, और फोर्थ बॉन्ड का रखना है आपको अबोव द प्लेन. इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो कोई भी मिथेन हो, इथेन, प्रोपेन, हाउ मेनी मेंबर ऑफ अल्केन? 10 मेंबर. कोई भी मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सभी का आप जो है तो वेज फार्मूला निकाल सकते हैं. ठीक है बेटा? क्लियर है? ओके. नाउ वी टेक द सेकंड ईयर. व्हाट इट इज मीन the methane molecule which have the 3 dimensional structure like that of what here? Wedge formula. Clear? Next here, what here? The point number 2, Fisher projection formula or cross formula. Fisher is a name of scientist. Here C is silent. Fisher projection formula or cross formula. What is the Fisher projection formula or cross formula? We take the definition here. The 3-dimensional structure of any compound in which the tetrahedral carbon are take as a cross line. Clear? In the 3-dimensional structure of any molecule in which the tetrahedral carbon are write as cross, as like what a cross link called as a what here?
द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और क्रॉस फार्मूला. देखो यहाँ पर बेटा दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज कार्बन ही है ना. देखो बेटा इट्स लाइक दैट ऑफ दिस मिडल इंडिकेट द कार्बन. इट इज मीन्स द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द व्हाट हियर, इट इज द फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड. व्हाट हियर, द लैक्टिक एसिड हियर. सो it is structure formula of lactic acid, and this structure formula is converted into which formula here, the Fisher projection formula. ठीक है. So what is the Fisher projection formula? The three-dimensional structure of any molecule in which we represented by tetrahedrally by cross line. Tetrahedral means how many carbon? This carbon, at least 4 carbon, 4 atom, 1 2 3 4 called tetrahedrally, and which are right as cross line. So it is called what here, the Fisher projection formula. यानी जो मिडल वाला है बेटा वो कार्बन को आप कैसे लिखेंगे, क्रॉस में लिखेंगे. देखो यहाँ पे कार्बन है ना, तो ये कार्बन को आपको यहाँ पे दिखाना नहीं है, कार्बन को जो है तो क्लोज फॉर्म में लिखना है. इट इज कॉल्ड व्हाट हियर, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और क्रॉस फार्मूला. तो सिंपल डिफिनेशन क्या लिखेंगे आप, द फार्मूला विल डिफाइन एज द टेट्राहेड्रल कार्बन आर राइट एज क्रॉस लिंक. सिंपल डिफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा आप, क्वेश्चन आता है डिफाइन द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. सो इट इज डिफाइन एज द टेट्राहेड्रल कार्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस लाइन, इट इज कॉल्ड एज द व्हाट हियर, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और क्रॉस फार्मूला. समझाया बेटा आपको, व्हाट हियर डिफिनेशन विल राइट हियर, द tetrahedral carbon are represented by cross line called as what here, Fisher projection formula. जो टेट्राहेड्रल कार्बन है बेटा उसको हम क्रॉस लाइन से लिखेंगे, ये क्रॉस लाइन, इट इज कॉल्ड द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और क्रॉस फार्मूला. एग्जांपल लैक्टिक एसिड, इट इज द फार्मूला लैक्टिक एसिड, it is called structure formula, it is called as what here, cross formula, and this cross formula are changing into which formula, wedge formula. These two bond indicate the what here, bond going to below the paper and above the paper, and two are same, these two are same, so it is called which formula, so it is called as the wedge formula. Clear beta? So it is an example of wedge formula, it is an example of cross formula, Fisher formula, and third example of what is structural formula. Now we take the third formula called as a Newman projection formula. Newman is also the name of scientist. He give the formula called as the Newman projection formula. Okay. So what is the Newman projection formula? We take here the what? The definition. So the Newman projection formula is defined as the formula in which the two carbon atom, one carbon are the write as a circle which is a front carbon, and second which is a circumstance of the circle called as a what here, a real carbon. So the formula in which the carbon are write as a rear carbon and front carbon, the rear carbon are above the circle whereas the front carbon are the below the circle. Okay, so it is called as what, Newman projection formula. ठीक है बेटा, इसके डिफाइन क्या लिखेंगे आप, the formula we define as the two carbon, one carbon is a front and second is a rear carbon. Front carbon are present in the circle whereas the rear carbon are present above the circle called as the what here, the Newman projection formula. देखो बेटा यहाँ पे ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है आपको बेटा, यहाँ पे सर्कल के अंदर जो ये सर्कल के अंदर जो कार्बन है, ये कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज व्हाट हियर, फ्रंट कार्बन. व्हाट हियर बेटा, फ्रंट कार्बन. वेयर एज दिस कार्बन जो सर्कल के बाहर है बेटा, ये कार्बन, ये जो सर्कल के बाहर है बेटा, ये वाला कार्बन, ये कार्बन है बेटा ये भैया. सो दिस कार्बन इज कॉल्ड एज व्हाट हियर, रियर कार्बन. ओके, सो what we define as both are first and second structure, both are same बेटा. सिर्फ यहाँ पे चेंज किया है, इसके जो मतलब एंगल है बेटा जीरो है, इसका एंगल जो थोड़ा चेंज रहेगा, यानी एंगल पे डिपेंड है बेटा. ये एंगल जीरो है, यहाँ पे चेंज रहेगा. ये क्लोज फॉर्म में, थोड़े ओपन फॉर्म में देखिए, दोनों सेम है बेटा. इट इज अ क्लोज फॉर्म, इट इज अ ओपन फॉर्म. एक्चुअली हाउ मेनी कार्बन इन दिस, इट कंटेन 2 कार्बन and 6 हाइड्रोजन. सो C2H is called as what, ethane. So the example of the Newman projection formula of the ethane molecule. आप इथेन मॉलिक्यूल ब्यूटेन कितने भी ले सकते हैं आप, सिर्फ आपको सर्कल चेंज करनी है. सर्कल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप चेंज करेंगे. सर्कल द सर्कल इंडिकेट अ कार्बन. देखो यहाँ पर ये कार्बन है,
इट इज कॉल्ड फ्रंट कार्बन, इट इज कॉल्ड रियर कार्बन, फिर एक रियर कार्बन, ऐसा आगे बढ़ता जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। ओके, सो इन दिस वे वी टेक द क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द न्यूमेन प्रोजेक्शन फार्मूला? So the Newman projection formula is defined as those formula in which the two carbon, one carbon is the front and second is the back, or what is one is called as the front and second is called a rear. The front carbon which is called as the what here? The front carbon which is the inside the nucleus, clear? Whereas the rear carbon is the outer side of the what here? The circle or nucleus. Okay. So it is called as what here? The Newman projection formula of the ethane molecule. ठीक है बेटा, तो अभी क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? क्वेश्चन क्या था हमारा? ड्राइंग द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल, यानी अगर आप कोई मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में लगती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा बनाएंगे? तो पहला पॉइंट क्या था? वेज फार्मूला। वेज फार्मूला में क्या करते हैं हम लोग? कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे, उसको मिडल में कार्बन देंगे, कार्बन होगा तो उसके जो मतलब बॉन्डिंग है वो अलग अलग देखिए। 2 बॉन्ड व्हाट आर द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रखना है, 1 बॉन्ड को गोइंग द बिलो द प्लेन और 3rd बॉन्ड को रखना है अबो द पेपर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिशर में क्या करना है आपको? वो जो कार्बन है उसको टेट्राहेड्रल कार्बन आर राइट एज अ क्रॉस लाइन, ये क्रॉस लाइन में लिखना है, कार्बन आपको दिखाना नहीं है यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ ओपन व्हाट हियर क्लोज, सो इट इज कॉल्ड व्हाट क्रॉस और व्हाट हियर द फिशर पोजीशन फार्मूला। 3rd न्यूमेन पोजीशन फार्मूला में क्या करना है आपको बेटा? यहाँ पे 2 कार्बन लेना है, टेट्राहेड्रल कार्बन, 1 कार्बन को रियर लेना है, सेकंड को फ्रंट लेना है। जो रियर कार्बन होता है वो मतलब सर्कल के बाहर होता है और जो फ्रंट कार्बन होता है वो सर्कल के अंदर होता है, ठीक है। और बाद में उसको 3 H लगाते हैं क्योंकि बिकॉज इट्स अ मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ व्हाट है? न्यूमेन प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ द व्हाट है? इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इन दिस वे वी टेक द हाउ टू राइट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एनी मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वेज फार्मूला, फिशर पोजीशन फार्मूला एंड 3rd व्हाट है? न्यूमेन पोजीशन फार्मूला। आपको इंपॉर्टेंट क्या है? आपको 12वीं क्लास में इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है बेटा? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, क्योंकि एक यूनिट है आपका बायोमॉलिक्यूल्स 12वीं क्लास में केमिस्ट्री 2nd पार्ट में, उसमें आपको ये फार्मूला याद रखना है। व्हाट इज द फिशर पोजीशन फार्मूला? द टेट्राहेड्रल कार्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस लाइन कॉल्ड एज द व्हाट हियर? फिशर पोजीशन फार्मूला और क्रॉस फार्मूला, ठीक है, क्लियर है। So in this way finish the what here? The wedge formula, Fisher projection formula and 3rd what here? Newman projection formula. Okay, clear? Thank you so much.